मार्च 2025 की रात दिल्ली स्थित दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के आधिकारिक बंगले में आग लग गई। फायर ब्रिगेड पहुंची तो छोड़ छोड़ कर जलाए गए 500 के नोटों का भारी डंप निकला। वीडियो में दिखा कैश बिखरा हुआ, आधा पूरा जला हुआ। लगता था मानो कोई मातृभूमि यानी गांधी पर आग लगा रहा है। इसी दृश्य ने पूरे देश की न्याय व्यवस्था को हिलाकर रख दिया। 3 न्यायाधीशों की जांच पैनल। शीर्ष न्यायाधीशों की तिकड़ी पैनल प्रमुख पंजाब हरियाणा एचसी चीफ जस्टिस शील नागू, हिमाचल और कर्नाटक एचसी के न्यायाधीश 10 दिनों तक जांच में जुटी। उन्होंने 55 गवाहों के बयानों, फोटोज और वीडियो की पड़ताल की। तत्पश्चात इसके निष्कर्ष 64 पन्नों में सामने आए। कैश का स्रोत और स्टोर रूम तक पहुंच। पैनल ने साफ कहा, नोट उस स्टोर रूम में थे जो जस्टिस वर्मा और उनके परिवार का सीक्रेट स्टोर रूम माना जाता है। यह कोई सार्वजनिक या सामान्य रूम नहीं था। पंच पत्रों और वीडियो में कैश के कारण एक्टिव या कवर्ट कंट्रोल का संकेत मिला, जिससे स्पष्ट हुआ कि ये नोट बाहर से नहीं बल्कि वहीं जमा किए गए थे। दावा था प्लांटिंग या साजिश। जस्टिस वर्मा ने कहा, मैं वहां था ही नहीं। नोट्स या तो प्लांट किए गए या फिर आग आरोप लगाने के लिए लगाई गई। लेकिन पैनल ने उनके दोनों बचाव को खारिज कर दिया, क्योंकि ना कोई पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई, ना सीसीटीवी फुटेज संभाल कर रखा। गवाहों के बयान धड़ाधड़। 10 से ज्यादा गवाहों ने बताया कि अग्निशमन दल पहुंचने पर उन्होंने अलग अलग जगहों पर आधे पूरे जले हुए 500 के नोट देखे। एक गवाह ने कहा, बड़े ढेर से नोट बिखरे थे, जिस पर मैं हैरान हो गया। और यह दृश्य था ना तो सामान्य और ना ही मामूली, इसलिए पैनल ने इसे बहुत गंभीर मिसकंडक्ट माना। क्लीन अप का खुलासा। पैनल के अनुसार नोट पाए जाने के बाद वर्मा के स्टाफ, विशेषकर निजी सचिव राजेंद्र कार्की और भरोसेमंद कर्मचारी, विच इंक्लूडेड क्लीनिंग एंड इंस्ट्रक्शंस इन फिगर फाइटर टू कैश, मत मेंशन करो, यानी रिपोर्ट में इसे शामिल ना करें। इसका अर्थ साफ था, सबूत मिटाने की कोशिश हुई। दबाव और ट्रांसफर का नाटक। गरमाई बढ़ने पर वर्मा को दिल्ली से अचानक इलाहाबाद एचसी भेज दिया गया, जहां उन्हें कोई केस नहीं सौंपा गया। पैनल ने इसे कानूनी दमक की कोशिश माना। इसके साथ साथ उन्होंने कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल के समर्थन का भी जिक्र किया। उन्होंने वर्मा को श्रेष्ठतम न्यायाधीश बताया और इम्पीचमेंट को राजनीतिक बताया। पैनल की कड़ी टिप्पणी, न्याय और नैतिकता। रिपोर्ट ने रीस्टेटमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ जुडिशियल लाइफ का हवाला देते हुए कहा, न्यायाधीश से बढ़कर ईमानदारी की उम्मीद की जाती है। अगर ये कम होती है तो जनता का विश्वास टूटता है और पक्का संकेत होता है कि इम्पीचमेंट की कार्यवाही जरूरी है। इम्पीचमेंट की राह खुली, क्या बनेगा इतिहास। अब ये मामला संसद की धारा 124(4) के तहत इम्पीचमेंट की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। जरूरत है 50 राजद सांसदों और 100 लोकसभा सांसदों की सहमति की। यह इंडिपेंडेंट इंडिया में पहली बार होगा जब कोई न्यायाधीश बलपूर्वक रिमूव्ड होगा। न्याय का रास्ता या आशंका। क्या जस्टिस वर्मा निर्दोष हैं या उनके खिलाफ तथ्य इतने मजबूत कि उन्हें हटाया जाना ठीक। पैनल ने प्रमाणों को ठोस मानते हुए इम्पीचमेंट की राय दी, लेकिन वर्मा की ओर से कहा गया कि यह उल्टा जमीन से ऊपर उठ रहा आरोप है। अब सबकी निगाहें हैं विधायिका पर। क्या संसद उनकी सफाई को अदालत करेगी या न्याय प्रणाली में एक नया अध्याय लिखेगी। R. Raman, the learned Solicitor General Tushar Mehta, Mr. Kapil Sibal, the President of the SCBA, Rachna Srivastava, the Vice President of SCBA, the law officers, the senior advocates, the family members of Vela Trivedi, a very dear friend and former Chief Justice of Gujarat High Court, Justice Sonia Gokhani, and members of the bar. Today we come together to bid farewell to our colleague, Honorable Justice Vela M. Trivedi.
The journey of Justice Trivedi to this court is indeed a compelling story. Her upbringing in Gujarat was marked by a variety of experiences due to her father's career in the judiciary, which involved frequent transfers. In a job that requires relocation, while there are challenges in settling down, it also offers exposure to the cultures of various cities and towns. I am certain these experiences would have broadened Justice Trivedi's understanding of the diverse challenges people face. Inspired by her father, Justice Trivedi pursued a career in law and practiced for nearly a decade on the civil and constitutional side, the Gujarat High Court. She then applied for high judicial service. A significant chapter in her judicial life commenced with her appointment to the City Civil and Sessions Court in Ahmedabad in 1995. It has a way of writing beautiful stories, and in Justice Trivedi's life, he wrote one such tale where she walked the same courtroom corridors as her father, both serving as judges at the City Civil and Sessions Court at Ahmedabad at the same time. This rare distinction was recognized by the Limca Book of Records, which recorded the entry in their 1996 edition as High Court, father-daughter judges in the same court. Justice Trivedi's extensive experience in the district judiciary gave her expertise in civil and criminal law as well as procedural law. As a member of the district judiciary, Justice Trivedi held several important roles. On the judicial side, he served as a CBI judge and as a special judge in several cases. Her judicial work was complemented by significant administrative responsibility, including her tenure as Registrar of Vigilance in the Gujarat High Court and as Law Secretary to the Government of Gujarat. In each of these roles, she displayed outstanding legal insight and administrative acumen. These responsibilities demanded a different set of competencies than those required on the judicial side. While adjudication calls for analytical rigor, neutrality, and legal interpretation, administrative roles require strategic planning, policy making, insight, institutional management, and the ability to coordinate across departments, stakeholders. As Registrar of Vigilance at the Gujarat High Court, she was interested with maintaining the integrity of the judicial system, handling sensitive issues with discretion, fairness, and firmness. Her tenure as a law secretary further demonstrated her capacity to engage with complex legal frameworks at the intersection of government and policy. As law secretary, she was instrumental in the establishment of the Gujarat National Law University. Justice Trivedi was elevated to the Gujarat High Court in 2011 and later to the Supreme Court in August 2021. Her elevation to this court is remarkable, as she is presently the only judge in the Supreme Court who rose to the ranks of the district judiciary. This rare journey from the grassroots levels of the judicial system to the apex court serves as an inspiration for many in the district judiciary. Her appointment brought a distinct perspective to the bench. As a judge of the Supreme Court of India, Justice Trivedi has dealt with a wide range of cases, spanning from criminal matters to those heard by constitutional benches. I had the opportunity to share the bench with her during the proceedings of the 7-judge bench, hearing on a significant constitutional question of whether subclassification among scheduled castes is permissible under the Constitution. Justice Trivedi authored the sole dissenting opinion in the case, a reflection of her independence of thought and her ability to express her views without hesitation. As a Supreme Court judge, Justice Trivedi, who served as a visitor to the Gujarat National Law University, an institution she had previously played a key role in establishing. In this capacity, she provided guidance to both faculty and students alike. Justice Trivedi is hardworking, with a keen eye for detail and a commitment to her thoroughly preparing for each case she presides over. On a personal note, when her name was doing rounds from January of 2021, I had an occasion to talk to her on several occasions, and then after elevation, I found an elder sister in her. So
She only elder to me by a couple of months, but she was always a beloved to me. And Ms. Matthews has mentioned about the next week's working. I have been blamed by her for that also. Because since I was to take over, the calendar was finalized by me. And I had received requests from many of the members that the beginning of July is not a right season for the Supreme Court to open up. And therefore, we decided to postpone the vacation by a week and also opening by a week. By now, on the basis of the practice which has been prevailing for last several years, they had already booked the tickets to go for attending a marriage in the family in the US, and I had to consider not to cancel her bookings. और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।